तो जो दुनिया का सहारा लेगा वो डूबेगा, और जो ज्ञान का सहारा लेगा, जो ईश्वर के द्वार पर, गुरु के द्वार पर गिर जाता है, जो ईश्वर के प्रेम में अपने आप को डुबा देता है, वो पार गया। और जो संसार के साथ अपनी मोहब्बतें जोड़ के रखता है वो तो डूब जाता है। इसको हम कहते हैं उलट बांसी, उल्टा बोल। मतलब कुछ और है, कहा कुछ और जाता है। और कबीर जी का इसमें कोई मुकाबला नहीं है। कबीर साहब ने इतनी सुंदर सुंदर उलट बांसियां दी हैं, पर वो बिना गुरु के समझ नहीं आती हैं। अपने आप चाहे मत्था फोड़ लो तुम कितनी देर, तो भी समझ नहीं आवेगी। वाह, अवधू ऐसा ज्ञान विचार, ऐसे ज्ञान की विचार करो तुम, समझो तुम, जानो तुम, खोजो तुम, ये कहते हैं। अच्छा, आप थोड़े से तुम लोगों के मैं सवाल भी ले लेती हूँ। दीक्षा चावला, कैन आई सी वेर यू आर प्लीज? ओह ओके, गॉट इट। Yesterday's session you asked us to bring attention to the center of forehead and visualize Om in the golden color. I wasn't able to visualize Om. How can I improve on that? I can understand your difficulty, ma. When mind is not totally quiet and silent, it will become difficult to do this kind of dharana. Dharana means to hold in your mind, to hold the image in your mind. Mind has to become very quiet, although it's not that you can't do it. Yes, you do it. Dear Diksha, please close your eyes. Only Diksha, not others. Diksha, close your eyes. Visualize the face of your mother. If you can do, then raise your right hand up so that I can see. Can you bring picture of your mom in your mind? Yeah. Can you bring picture of your dad in your mind? Yeah. Can you bring picture of the house in the mind? Your house. Yeah. There you go. See, you know how to visualize. What you can do is that maybe have a golden colored Om picture in your puja room or in your bedroom, wherever. So sit in front of that and keep looking onto that. And in few days, what will happen is that you are looking at that Om. Close your eyes for some time and then try to look inside. Then again open your eyes, look outside, then close eyes, then open, then close. And the time would come, it will become easier for you to visualize Om. Okay? Naveen Jiske something, if I'm Jeshe, yes. Okay. I think so. I've already answered your question. Everything comes from consciousness. From where does consciousness comes from? This is what we were just, I was talking about. From the Chaitanyata comes. Like there is a sun up in the sky and the light reaches to us on the earth. The sun doesn't come to the earth, but the rays come to the earth. Similarly, in the mind, me, the Chaitanya doesn't goes all into the mind. It is just that I am like the sun and my ray is like the consciousness, which goes and functions the mind, makes the intellect function, makes the senses function. So consciousness is not separate as such from me, but it is just my ray, not me, the totally. So in Sanskrit we have two words, Chaitanya
and Chetana. These are not one. Chaitanya, Chetana. Chaitanya is your real Swarup, and Chetana is like the ray of this Chaitanya which activates the mind and the prana and everything. Okay? सुनीता, अच्छा, माँ लिखती हैं, पूरी मैं कैसे मिटे, कृपया मार्गदर्शन करें। माँ, जिस मैं को तुम मैं समझ रहे हो, वो मैं तो सिर्फ छाया है। वो मैं सिर्फ छाया है, वो मैं तो है ही नहीं। जैसे ये मेरा हाथ, और ये तुम अगर कुर्सी पे देखोगे तो छाया मेरे हाथ की पड़ रही है। अब इस छाया को मैं कैसे मारूं? बस हाथ हटा दूं, हाथ की छाया मर गई। समझे? ये भैया बहुत बढ़िया कुर्सी है, लो भैया फिर से देखो, मेरी कुर्सी डेमो हो गई है सत्यनारायण। ये हाथ, कैन यू सी द शेडो ऑफ माई हैंड? ओके, नाउ गेट दिस हैंड इज लाइक योर रियल सेल्फ, and the shadow is the unreal self which you call I. ये हाथ समझो कि जैसे तुम हो, असल में तुम, और ये जो छाया हाथ की पड़ रही है, ये है तुम्हारी झूठी मैं। ये मैं जिसको तुम मैं कहते हो, असल में कहाँ है? गहरी नींद में मैं रहती नहीं, रहती है क्या? ना, गहरी नींद में कहाँ सोई है इसका कुछ पता नहीं। गहरी नींद में सुनीता मेरा नाम है ये भी याद नहीं। गहरी नींद में सुनीता के कितने बच्चे हैं ये भी याद नहीं। कौन घर है, कितना पैसा, क्या दुख है, क्या सुख, कुछ पता नहीं। क्यों? जिसको आप मैं कह रहे थे वो सुषुप्ति में लीन हो गई। लेकिन उस गहरी नींद को, उस सुषुप्ति को किसने अनुभव किया? वो आप साक्षी स्वरूप ने ही अनुभव किया। तो झूठी मैं को कैसे मिटाऊं, सवाल ही नहीं बनता। जो है ही नहीं उसको मिटाओगे कैसे? जो है ही नहीं उसको मिटाओगे कैसे? नाउ इंग्लिश, ओके। One is the real self, the other one is the unreal self. We have two eyes. One is real, one is unreal. So, Sunita ji was asking, how can we remove this I? And I'm saying, this I with which you are familiar with is just like a shadow of the real self. And we have to do nothing actually to remove this shadow of real self. We just have to know who I am. And I am Satchitananda. I am the truth, conscious, ever blissful existence. I am, in one word, Upanishad says, Tattvamasi. You are the Tattva. What is the Tattva? Sat Chit Anand is the Tattva. You are the Tattva. Tat is God, Tvam is you. Asi means one. Tat, Tvam, Asi. It's a Mahavakya of Veda. Now when I say you and God are one, am I talking about your unreal self? No. Nah. Am I talking about the jiva, the individual soul? No. I'm talking about you. Minus the body, minus the mind, minus the senses, minus... No, in English, many authors have written this book, I am consciousness, I am consciousness. Very humbly, I would like to correct
not consciousness, because consciousness will become Chetana, which comes and goes. You are conscious in waking stage, and then you go unconscious in the deep sleep. So should I say you don't exist in the deep sleep and you exist in the waking sleep, waking time? No. But Chetana, the consciousness, is definitively missing in the deep sleep. But who experiences the deep sleep? Who witnessed the deep sleep? It's you. So you are present in the deep sleep, you are present in the dream state, you are present in the waking state. आप जागृत को भी जानते हो, आप स्वप्न को भी जानते हो, आप सुषुप्ति को भी जानते हो, आप तीनों अवस्थाओं को जानते हो। तुम्हारे सामने कभी जागृत आती, कभी स्वप्न आता है, कभी जागृत आती, कभी सुषुप्ति आती है। ये अवस्था बदलती है पर तुम नहीं बदलते हो। चेतना कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, तुम हमेशा रहते हो। वाह। तुम अपने आप में संपूर्ण हो। पर जब मैं कहती हूं तुम संपूर्ण हो, तो मैं तुम्हारे मन को नहीं कह रही हूं। मन तो तुम्हारा घोंचू है, गलतियां करता रहता है, मूर्ख है, बेअकल है। कभी इस पे जान देता है, कभी उस पे जान देता है, कभी लड़की पे जान देता है, कभी लड़के पे जान देता है, कभी पैसे पे जान देता है, कभी जायदाद पे जान तो देते ही रहते हो। एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को लिखा, जानम तुम तो मेरी जान हो। उसने जवाब दिया, निकल गई है नहीं अब, तेरी जान तो गई, कित्थे गई? बोले अब तेरे से हमारी कट्टी हो गई, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हम तो निकले। तो जान तुम किसको बनाओगे? किसी को भी नहीं। तो मन के तल पर दुखी सुखी होते हो, मन के तल पर तुम पापी पुण्य होते हो, मन के तल पर तुम धर्मात्मा और पापात्मा हो सकते हो, शरीर के तल पर तुम मोटे पतले गोरे काले हो सकते हो, पर अपने निज स्वरूप में तुम सिर्फ सच्चिदानंद स्वरूप हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर रहे रहे, ना रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं। अभी जो दूसरा भजन, चांस की बात है, आज तो कबीर साहब का दिन है। पहला भी उनका हो गया, दूसरा भी अब उन्हीं का आ रहा है। कबीर साहब कहते हैं, बाबा जोगी एक अकेला। मैं जोगी हूं, मैं अकेला हूं, पर जाके तीर्थ व्रत न मेला। मैं वो जोगी हूं, किसी तीर्थ नहीं जाता, किसी मेले में नहीं जाता। क्यों? मैं अपने आनंद में आनंदित रहता हूं। झोली पत्र विभूत न बटवा। आमतौर पर जो इन द ओल्डर डेज द योगीज, देयर वाज वन क्लास ऑफ योगीज हु वुड कैरी अ कॉटन बैग. It was called jholi. They would keep patra. Patra means the part, the book in which all the scriptures are. Vibhuti, they would use the ash of the havan, the fire ceremony havan, with them. And they would keep a small vatva. Vatva means purse. And in that purse they would keep their japmala. These were the properties of a yogi. They wouldn't have anything else with them. The yogi was supposed to walk alone, sleep under trees, drink from rivers, beg for food once a day, and meditate whole day. That was the yogi. But Kabir is saying, I am such a yogi who doesn't have that jholi, the cloth bag. I don't have the patra, any scripture. I don't have the vibhuti, the ceremonial ash. I don't have the batwa, and anahad ben bajave. And I am playing the flute of anahad.
Anahad means the soundless sound. I am playing the flute of soundless sound. Maang na khaye na bhukha sobe, ghar angana phir aave. I don't beg, and I just move about in front of all the houses. 5 जनों की जमात चलावे, तास गुरु में चेला. And I have a class in which there are 5 pupils. I run this class in which there are 5 pupils, students. I am their teacher and they are my chela, meaning student. Now, what class is this? The 5 senses are the class, and I am the guru of my 5 senses. So my 5 senses don't go away anywhere and do whatever. They are in my command. Kahe Kabir un desh sidhaye, bahor na eh jag mela. Kabir says, while being in this body, I have already attained and transcended this body. And now I won't be reborn again in this world, in a body. I won't be coming back because I have burnt all the fodder of desires and karma. I have burnt them all. I have now no debt left on my head. Which debt? Karmic debt. Mortgage of karma. When you don't pay the mortgage of the bank can come and confiscate your house or car, right? A man took loan for his marriage in India. Then he never paid the loan. Then the bank officers came and he said, take it. ले जाओ. क्योंकि कार लोन पे लोगे तो बैंक वाला कार ले जाएगा, घर लोगे लोन पे तो वो घर ले जाएगा. अब शादी करी है तो बीवी लोन पे आई है, लोन पे नहीं किया, कर्ज पे नहीं किया, बैंक वाला आ गया कहता. पर साहिब कहते हैं अभी मेरा किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं, कर्म का खाता मेरा खाली हो गया है. अब किसी की कोई देनदारी मेरे सिर पर नहीं है. मैं अब लीगली बाउंड नहीं हूं संसार से. मैं अब मुक्त हुआ. कैसे? अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान पाके मैं मुक्त हुआ. अब मेरे को संसार बांध नहीं सकता है. मैं मुक्त हुआ. मरने के बाद की मुक्ति नहीं, ये तो जीते जी मुक्त हुआ. My moksha is not going to happen when the body will die. Kabir says, I am mukta, free, liberated, while this body is very much alive. Those who say that you will get liberation when you will die, they are lying to you. They are not speaking truth. The true liberation is when the body is very much alive and breathing and senses are working, and yet inside mano buddhya ahankara chitta ninaham न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम. I am not bound with anybody.